Dear friends, am I audible? So today we are going to start the new topic or the new pathogenic factor, that is dampness. So we have completed wind, cold, fire. Now moving to the dampness. Shall we start now? तो चलिए, कल हमने बात किया था कि लार्ज इंटेस्टाइन 2 कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. Large intestine 2 is the very good point for the constipation. Why? Because constipation most of the time is the result of heat in the large intestine or the dryness in the large intestine. तो जब हमारी इंटेस्टाइन में हीट बढ़ती है हमारी इंटेस्टाइन में जब गर्मी बढ़ जाती है तो कॉन्स्टिपेशन होता है. तो Li2 को जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो Li2 is the water point. So when we massage the Li2, when we stimulate the Li2, it is working for the constipation. This is the very good point working for the constipation. ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है. Li2, large intestine 2, right? Okay. So let's start the discussion on dampness. So what is the meaning of dampness? As per the 5-element cycle, as per the 5 elements, dampness is a energy who is heavy in the nature. Dampness वो ऊर्जा है जो भारी होती है. So in the 5-element cycle, we know this is the wind, then the fire, then the dampness or humidity or moisture or earth element. Then the metal, and the final is the water. So when we talk about the dampness, in the 5-element cycle, dampness means earth element. हमारे 5-element की cycle में dampness एक earth element है. So we can divide from here. We can divide from here. So this is the yang side and this is the yin side. ये yang है और ये yin है. They are opposite to each other. ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है. Yang is opposite to the yin and yin are opposite to the yang. So if we are increasing the yang, they will decrease the yin. And if we increase the yin, they will decrease the yang. हम किसी को भी बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ का वो कम होता है. अगर हम फायर को बढ़ाएंगे तो मेटल कम होगा, वाटर कम होगा. So the yang is decreasing the yin and yin is decreasing the yang. So when we talk about the dampness, dampness is yin in the nature and dampness is injuring the yang. Injuring the yang. ठीक है, ये हमारे yang को इंजर करती है. तो चलिए एक बात हम जान जाएं कि पहली बात कि जैसे हवा का नेचर होता है उड़ना, ऊपर की ओर जाना, अग्नि का नेचर होता है ऊपर की ओर जाना, लेकिन अगर कोई भारी भरकम चीज हो उसका नेचर होता है नीचे की ओर गिरना. जैसे एक पत्थर है, पत्थर को आप छोड़ दो तो पत्थर नीचे की ओर गिरेगा, पत्थर नीचे की ओर गिरेगा. सो इफ यू आर थ्रोइंग वन स्टोन इट विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यांग का नेचर होता है ऊपर की ओर जाना और यिन का नेचर होता है नीचे की ओर आना. And dampness is having too much yin force. Dampness is very heavy, always want to go down, like it is going toward the gravitational force. जैसे पत्थर को फेंका तो अपने आप नीचे आता है, ऐसे dampness का प्रभाव है नीचे की ओर आना. जैसे अगर आपके शरीर में
गर्मी बढ़ जाए, तो गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी ऊपर चढ़ेगी, सिर में चढ़ेगी। लेकिन अगर आपके शरीर में डैम्पनेस बढ़ जाए तो डैम्पनेस नीचे की ओर चढ़ेगी, यानी वो नीचे के पार्ट को प्रभावित करेगी। सबसे पहले पैरों को, फिर जेनिटल पार्ट को, फिर यूटेरस को, नीचे के पार्ट को प्रभावित करेगी। सो when the fire is increasing in the body, so fire is having two yang nature, so it is going in the upward direction and it is affecting this part. So when fire is high, the eyes will become red, face will become red, and you might be feeling the headache, anger, irritability. So the nature of fire is going in the upward direction. The fire might affect your heart. But when we talk about the dampness, dampness is heavy in the nature, so it want to go down. First, it is affecting the lower part of the body, the lower barber of the body. First, it is affecting the legs, then going to the genitals, going to the urinary bladder, going to the intestine. So if it go to the urinary bladder, it might create a urinary tract infection or UTI. If it is going to the intestine, it might create diarrhea. If it is going to the genital part, it will create leucorrhea in the female, because the nature of dampness is to go in the downward direction. It want to pull everything downward. So the female will suffer leucorrhea if dampness will attack in the body, because the target area of the dampness is lower part rather than upper. तो जैसे अगर आपके शरीर में अग्नि बढ़ जाए तो अग्नि आपके ऊपर के भाग को प्रभावित करेगी, आपके हार्ट को प्रभावित करेगी, आपके ब्रेन को प्रभावित करेगी। उसी तरह से अगर आपके शरीर में डैम्पनेस बढ़ती है तो डैम्पनेस आपके नीचे के भागों को प्रभावित करेगी, वो पैरों को, जेनिटल पार्ट को, आपके इंटेस्टाइन को प्रभावित करेगी। तो इंटेस्टाइन में अटैक हुआ तो डायरिया हो जाएगा, क्योंकि डैम्पनेस नीचे की ओर जाना चाहती है। और अगर जेनिटल पार्ट में अटैक हुआ तो फीमेल को ल्यूकोरिया हो जाएगा। So the nature of dampness is affecting the lowermost part of the body, right? It is clear? Fine. So let's see. So just we have started, don't worry. So now the dampness. The causes of the increasing dampness in the body. Number one cause, if you are in the rainy water, like suppose summer season is going, and after the summer season, rainy season is coming. So in the rainy season, there is more dampness. There are more dampness, right? So as soon as the summer season is going and the rainy season is coming, there is a more dampness. So if someone is in the more contact of the rainy water, might get the attack of dampness. जैसे ही गर्मियों की ऋतु जाती है और वर्षा की ऋतु का आगमन होता है, तो वर्षा ऋतु के आगमन होते ही चारों तरफ डैम्पनेस की अधिकता हो जाती है। चारों तरफ का वातावरण बादलों से घिर जाता है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो जाता है। उस क्लाउडी एटमॉस्फेयर को हम डैम्प एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो वर्षा भी होती है, डैम्पनेस भी रहती है, तो उस समय डैम्पनेस का अटैक होने की संभावना बनी रहती है। So there are many people who are getting the attack of the dampness in the rainy season. Even if someone is living in the damp house, because sometimes we can see in the home we have dampness, in the home we have leakage. So if there is a leakage in the home, there is a dampness in the home, and you are living in the same home, it might also increase the dampness. अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहां का वातावरण डैम्प है, जहां पर लीकेज है, पानी रिसता है और दीवारें गीली हैं, फ्लोर भी थोड़ा सा गीला है, और अगर आप ऐसे वातावरण में सोते हैं तब भी आपको हो सकता है। एंड इवन इफ यू आर बियरिंग द डैम्प क्लॉथ्स, many person are sweating a lot,
because few person are getting lesser sweat, the other people are getting more sweat. The sweat is also making your cloth wet and damp. Even if you are in this damp cloth for the longer duration, it might also attack the dampness in your body. कभी कभी हमारे शरीर में बहुत पसीना निकलता है, और वो पसीना हम उन्हीं कपड़ों को पहने रहते हैं सारा दिन, इनर गारमेंट्स में काफी पसीना इकट्ठा हो जाता है, तो उनमें वही गीलापन ही डैम्पनेस का आक्रमण कर देता है. We can see this is the like foamy atmosphere all around. There is a fog. In this fog also there might be the attack of dampness in the body. Even if there is a cold stone, suppose you are sitting on the cold stone near the river, it might also attack the dampness. It might also create the dampness in the body. इन सारे कारणों से आपके शरीर में डैम्पनेस का आक्रमण हो सकता है. चाहे आप गीले घर में रहते हैं, चाहे आप गीले कपड़े पहनते हैं, चाहे आप पानी में गीले हो जाते हैं फिर वही कपड़े पहने रहते हैं लंबे समय तक, या पानी में लंबे समय तक आप नहाते रहते हैं गीले कपड़े पहनकर, या चारों तरफ कोहरे वाले वातावरण में आप ज्यादा समय तक रहते हैं, या नदी के किनारे गीले पत्थरों पर बैठते हैं, तो ये सारे कारण डैम्पनेस आपके शरीर में क्रिएट कर सकते हैं. तो डैम्पनेस उन किसी भी कारणों से आपके शरीर में आ सकती है जहां पर थोड़ी नमी हो, गीलापन हो. Right? Even in the many cities, like we have seen the Kolkata, like the Mumbai, and even there are many other cities, they are having more dampness in the weather. So the city itself having more damp atmosphere, more damp weather. So there are more moisture in the air. So the people are more prone to get the attack of dampness during this atmosphere when they are living in these types of weather. So there are more chances to get attacked by the dampness. तो कई बार हम ऐसे शहरों में रहते हैं जहां ऑटोमेटिकली ज्यादा डैम्पनेस पाई जाती है, तब भी हमारे शरीर पर डैम्पनेस का आक्रमण हो सकता है. मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पेशेंट आया जिसने ऐसे एक गीले पत्थर पर बैठकर कुछ अनुष्ठान किया, कई घंटों का, 6-7 घंटे का अनुष्ठान किया. वहां पर अपनी माला जपता रहा और ऊपर से पानी भी गिर रहा था. तो उसके शरीर में डैम्पनेस का ऐसा आक्रमण हुआ और लोअर पार्ट में आक्रमण हुआ, उसकी कमर अकड़ गई और 4 महीने तक वो दर्द से पीड़ित रहा, इधर उधर घूमता रहा. बाद में हमारे पास आया वो. सो द पर्सन वाज सिटिंग ऑन द कोल्ड स्टोन डूइंग द सम meditation, some japa for many hours, and on the same day it was raining a lot. So the person got the attack of dampness and got the lower back pain, because dampness first target the lower area, and it was not going with any medicine. So after suffering for many months, like the 4 months, then he came for the treatment. So this is the attack of dampness, right? So many persons are living in these types of the home and they are suffering with the many types of the problem. I have seen many females who lives in the damp house and they got leucorrhea problem. कई महिलाएं जो इस तरह के डैम्प होम में रहती हैं उनको अक्सर ल्यूकोरिया हो जाता है, और भी 50 प्रकार की बीमारी हो सकती है. ये तो मैं आपको सिर्फ कुछ उदाहरण दे रहा हूं. लेट्स सी दिस. सो द फर्स्ट टारगेट एरिया ऑफ द डैम्पनेस इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो डैम्पनेस फर्स्ट अटैक इन द लोअर पार्ट. ओके, सबसे पहले डैम्पनेस का जो टारगेट एरिया होता है वो हमारा लोअर बार्मर होता है. लोअर बार्मर ना तो मिडिल पार्ट होता है ना अपर पार्ट होता है, बल्कि डैम्पनेस का जो फर्स्ट टारगेट एरिया होता है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है. सो फर्स्ट इट इज अफेक्टिंग द लोअर पार्ट, इट इज अटैकिंग द लोअर पार्ट, देन इट इज गोइंग टू द जेनिटल्स एंड क्रिएटिंग ल्यूकोरिया. तो ये लोअर पार्ट में आक्रमण करता है डैम्पनेस और जेनिटल पार्ट में जाकर ल्यूकोरिया पैदा करता है. महिलाओं को सफेद ल्यूकोरिया पैदा कर देता है, श्वेत स्राव, व्हाइट डिस्चार्ज पैदा कर देता है. और व्हेन इट इज गोइंग टू द इंटेस्टाइन इट क्रिएट डायरिया. जब ये आंतों में चला जाता है तो लोगों को लूज मोशन या डायरिया पैदा कर देता है. एंड व्हेन इट इज गोइंग टू द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, इट इज क्रिएटिंग द यूटीआई और द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. जब ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है तो यूटीआई नाम का रोग पैदा कर देता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन.
पेशाब में जलन होना, अटक अटक के पेशाब होना और पेशाब के साथ दर्द होना, ऐसे कई लक्षण पैदा होते हैं। जैसे ही पेशेंट को यूटीआई होता है वो डॉक्टर के पास भागता है, डायरिया होता है तो भी डॉक्टर के पास भागता है, और महिलाओं को जब लीकोरी होता है तो भी गायनिक डॉक्टर के पास भागती हैं। So when the person is having these types of the problem, whether the leucorrhea or the diarrhea or the UTI, they are running to the doctor for taking the treatment. So dampness is responsible for creating these all types of the problem. Now, the quality of dampness, dampness आखिरकार create क्या करता है? हमने बताया कि dampness का जो nature है वो है to create the heaviness. Dampness का जो पहला लक्षण है वो है heaviness. Like something you are walking, but you are walking with the weight. कि आप पैर में कुछ भारी सामान लटका के चल रहे हैं, यानी पैरों में ताकत नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, उसका पहले वो 50 किलो का था, अब मान लो वो 90 किलो का हो गया, तो एनर्जी वही है लेकिन अभी 40 किलो एक्स्ट्रा वेट लेके चल रहा है, तो वो भी वेट भी एक तरह का डैम्पनेस ही है. दैट इज ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ ह्यूमिडिटी. So the person walking with a heaviness, like someone is having too much heaviness in the leg, even when the person is walking, the leg are not supporting. जैसे एक छोटा बच्चा है, मान लो 3 साल का बच्चा है, 3 साल के बच्चे को के ऊपर आपने 20 किलो का वजन रख दिया और उसको बोला चलो, तो चल नहीं पाएगा. So the kids of 3 years cannot walk with the weight of 20 kg or even the 10 kg. Okay. In the same way, when there is too much dampness in the leg, you are feeling too much heaviness. When there is a dampness in the arm, you are feeling too much heaviness in the arm, you are not able to move it. So wherever dampness will be there, you will be feeling the heaviness. If there is a more dampness in your abdomen, you are feeling too heavy abdomen. जहां भी dampness बढ़ जाएगी वहां पर आपको भारीपन लगेगा. लोग अपना हाथ नहीं उठा पाते, लोग पैर उठाकर चल नहीं पाते, उनको शरीर बहुत भारी भारी लगता है. वो भारीपन क्या है? वो भारीपन dampness है. Okay. I have seen many person, they are 100 kg weight, they are having 100 kg weight, but they are very muscular, they are very dynamic, they are doing regular exercise, they are going for gym, and they can run very fast, they can jump very fast even after they are 100 kg. कई लोग 100 किलो के होते हैं, फिर भी दौड़ते हैं, जंप लगाते हैं, कूदते हैं और डायनामिक रूप से सारा काम करते रहते हैं, भले ही उनका वजन 100 किलो है. जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को मस्कुलर बना के रखते हैं. लेकिन वहीं दूसरी ओर एक 60 किलो का आदमी पैर उठाकर चल नहीं पाता, ताकत नहीं है पैरों में. On the other side, the person having only 60 kg weight, not able to walk. Why? Because of feeling too much heaviness in the leg. So this is the result of dampness. Dampness is creating heaviness in the body. हमने देखा है कई महिलाएं वॉकर की मदद से चलती हैं, लेकिन तब भी वो पैरों पर वजन उठा ही नहीं पाती. उनको चलने के लिए, यानी ऐसा नहीं कि चलती है और वॉकर भी हाथ में. So they cannot bear the weight on the legs. They are not having that power on the legs. They feel too much heaviness. अब कोई महिला है जिसका वजन 80 किलो है, हमने कई महिलाओं को देखा 70 किलो, 80 किलो, इवन 60 किलो वजन है, उनको वॉकर की मदद लेनी पड़ती है, अपना खुद का वजन नहीं संभाल पाती. क्यों? डैम्पनेस. डैम्पनेस ऐसा उनको एहसास कराता है कि उनके शरीर में बहुत ज्यादा हैवीनेस बढ़ी हुई है. सो डैम्पनेस इज क्रिएटिंग टू मच हैवीनेस. इवन द 60 kg weight person cannot able to walk with the legs because of the too much dampness. So then they are walking with the support, they are walking with the help of walker and all. So dampness giving you feeling of heaviness. So when the person is feeling heaviness in the arm, cannot lift the arm, feeling heaviness in the leg, cannot lift the leg, cannot wear the body weight, right? So dampness, the first characteristic of the dampness to create the heaviness. The second characteristic is tiredness. The tiredness. Whether the person is slim or overweight,
no matter. Many person feel tiredness very fast. So tiredness also the result of dampness. जब कभी लोग थोड़ा सा काम किया और थक गए, क्योंकि डैम्पनेस शरीर में एक तरह का जैसे भरा हुआ कचरा, कि कचरे को ढो ढो के चल रहे, जरा सा काम किया एनर्जी खत्म. So tiredness is the result of dampness. Nowadays there is a disease that is called chronic fatigue syndrome. Chronic fatigue syndrome. Without any reason, the patients are suffering with the tiredness. ये बीमारी का नाम है, क्योंकि ऐसे लोगों की टायर्डनेस ही नहीं मिटती, थकान ही नहीं मिटती, कुछ भी ना करें तो भी थके हुए रहते, सुबह उठते ही थक जाते, सुबह सो के उठे थके हुए उठते, रात भर सोते और फिर भी थके हुए उठते हैं, सारा दिन थकान, कुछ भी ट्रीटमेंट कर लो उनकी थकान नहीं जाती. सो द टायर्डनेस इज द characteristic or the quality of the dampness. The fullness is the characteristic or quality of the dampness. So the person are even not eating anything and feeling full. कुछ खाया पिया नहीं और लग रहा है जैसे खा पी के बैठे हुए. यानी डैम्पनेस इतना भारीपन और फुलनेस पैदा कर दिया है, आपको शरीर में ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा शरीर फूल गया है, जरा सा खाना खाया. यानी लोग कहते हैं कि हमने आधी रोटी खाई और लगता है जैसे कितना खाना खा लिया. Even the eating the half bread and feeling like too much fullness, like they have eaten a lot. So the dampness can create the fullness. Dampness can create the dullness. People are not feeling good enough, not happy. It is creating the mental and physical dullness. And the dampness can create the stiffness. The people are feeling stiffness in the lower back, stiffness in the upper back. So this is also the sign of dampness. And the dampness can create the stickiness. Stickiness, they feel like sticky tongue, sticky body. चिपचिपापन महसूस करते हैं, यानी बॉडी में कुछ एक अजीब तरह का चिपचिपापन महसूस करते हैं, बॉडी में स्टिफनेस महसूस करते हैं, डलनेस महसूस करते हैं. तो ये कुछ लक्षण हैं डैम्पनेस के, हम इनको आगे समझेंगे धीरे धीरे करके. सो लेट्स सी दिस. सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैम्पनेस, नंबर 1 स्टिकी, नंबर 2 हैवी. स्टिकीपन फील करना, हैवीनेस फील करना. स्लो डाउन द हीलिंग प्रोसेस. अगर आपको मान लो किसी को चोट लगी, तो एक व्यक्ति की चोट तो फट से भर जाएगी और एक व्यक्ति की चोट को भरने में टाइम लगेगा और कभी कभी भरेगी नहीं. जैसे आपने देखा होगा कई डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, अगर उनको चोट लगती है तो उनको कई बार अल्सर हो जाते हैं और भरते ही नहीं है. क्यों नहीं भरते? क्योंकि उनके शरीर में बहुत ज्यादा डैम्पनेस है. डैम्पनेस का मतलब होता है कचरा. जितना ज्यादा कचरा होगा उस घाव को भरने में उतना समय लगेगा. और कई डायबिटीज वाले पेशेंट के शरीर में इतना कचरा हो जाता है कि घाव भरता ही नहीं है. तो हम बोलते हैं भाई इनको नॉन हीलिंग अल्सर हो गया, ऐसा अल्सर जो हील ही नहीं होता. ओके, सो द डैम्पनेस इज स्लोइंग डाउन द हीलिंग प्रोसीजर. सो इफ समवन इज नॉट गेटिंग प्रॉपर हीलिंग, राइट हीलिंग, on time healing, so we have to reduce the dampness, we have to expel the dampness, because dampness is creating this problem. And the person who is not having unwanted dampness in the body will get the injury, will get recovery very fast. अगर किसी के शरीर में चोट लगी और फट से हील हो जाएगी. हमने देखा है कि छोटे बच्चे हैं, खेलते कूदते रहते हैं, जंप करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, चोट लगती है जल्दी ठीक हो जाते हैं. लेकिन एक मिडिल एज का व्यक्ति है जो मोटा है, जिसके शरीर में काफी कचरा है, डैम्पनेस है, उसे चोट लगती है लेकिन हील होने में काफी समय लग जाता है. ये सब डैम्पनेस के कारण होता है. सो डैम्पनेस इज स्लोइंग डाउन द प्रोसीजर, लाइक वी हैव सीन इन द मेनी मिडिल एज पीपल. They are not getting healing very fast. They take too long time to get healed. On the other side, if the kids are getting injury, they are healing very fast. Why? Because they don't have unwanted dampness in the body. The dampness want to go in the downward direction because of its heavy nature. डैम्पनेस का टारगेट एरिया होता है कि ये नीचे की ओर जाना चाहती है, क्योंकि डैम्पनेस का जो लक्षण होता है वो होता है, डैम्पनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हैवी होता है. हैवी जैसे ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, वो नीचे की ओर फ्लो करता है. डायरिया वो नीचे की ओर फ्लो करता है. तो डैम्पनेस का नेचर ही होता है नीचे की ओर जाना. सो डैम्पनेस वांट टू फ्लो डाउनवर्ड. ओके, नाउ डैम्पनेस हैविंग टेंडेंसी ऑफ द रिपीटेड अटैक और द रिकरेंट अटैक. एक बार किसी को यूटीआई हो गया, आप देखो पेशेंट बोलेगा मुझे हर साल होता है, हर 6 महीने में होता है, होता ही रहता है. किसी को ल्यूकोरिया हुआ, जरा सा खाना पीना गड़बड़ हुआ,
कुछ प्लस माइनस हुआ, कुछ अनहाइजीनिक चीजों का को यूज कर लिया तो उनको ल्यूकोरिया हो जाएगा। तो ये डैम्पनेस वाली बीमारियों का ये नेचर होता है कि ये बार बार होती हैं। सो ऑल द डिसीज which is happening in the body because of the dampness, they might happen again and again. There are always chances to having recurrent attack. So dampness is yin in the nature. So dampness in injuring the yang. ये yang को इंजर कैसे करती है, मैं आपको उदाहरण दूं। जैसे एक पानी की पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन में पानी बह रहा है। अब क्या हुआ कि बर्फ जम गई, तो क्या होगा, पानी के अंदर बर्फ जम गई। जैसे हमने देखा है कई कोल्ड कंट्रीज में ऐसा होता है कि पानी की पाइपलाइन के अंदर बर्फ जम जाती है तो पानी बहना बंद हो जाता है। ये आप समझ लो कि कोई भी पाइपलाइन है, अगर उसके अंदर कचरा जम गया तो उसमें जो भी चीज बहती है वो बंद हो जाएगी। सो व्हेनेवर if we see any pipeline, the water is flowing in the pipeline and something is flowing in the pipeline, but if there is unwanted dirty things in the path, then the water will not flow, the things will not flow. In the same way, when there is too much dampness in the body, it is not allowing flow the energy. Suppose there is a dampness in the middle part, so it will not allow to flow of yang in the upward direction. Yang will not able to flow in the upward direction if dampness is blocking the path. So it is injuring the yang. तो dampness उस कचरे की तरह है जो पाइपलाइन में जम जाता है और पाइपलाइन में चीजों को बहने नहीं देता. So dampness like a dirty thing which is obstructing the pipeline and not allowing to flow it properly. So dampness is yin in the nature. Yin means dirtiness, like something like a material who is blocking the channels, and it is injuring the yang. It is not allowing the flow of yang. तो कभी कभी ऐसा होता है कि डैम्पनेस के कारण बहुत गड़बड़ होती है कि हमारी ऊर्जा इधर उधर नहीं जा पाती, कहीं रास्ते में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, हमारी ऊर्जाओं का आदान प्रदान कम हो जाता है. So these all characteristics are belonging to the dampness. Let's see this. So let's see this. So dampness create heaviness. I told you already. The dampness create heaviness and heaviness causes. dampness क्या करती है? dampness भारीपन पैदा करती है. और भारीपन क्या करता है? मैंने बताया कि भारीपन आपको टायर्ड बनाता है. So the heaviness creating you tiredness. So the person is getting frequent tiredness. So you have to work on the dampness. So the tiredness is the first characteristic. तो नमी भारीपन पैदा करती है और नमी भारीपन पैदा करती है और भारीपन का कारण बनती है. राइट नाउ दूसरी बात कि नमी थकान पैदा करती है. थकान पैदा करती है. इट क्रिएट द टायर्डनेस, इट क्रिएट द हेवीनेस इन द लिम्ब. ये अंगों में भारीपन पैदा करती है. आप अपने हाथ को उठा नहीं पाओगे. आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ में किसी ने कितने किलो का वजन टांग दिया है और आप हाथ को मूव नहीं कर पा रहे हो. So it will create heaviness in the limbs and you will not able to move your limbs. You will not able to lift your limbs. It will create the mugginess in the head region. यानी सिर में चक्कर पैदा करेगी. आपका सिर चकराएगा, सिर में चक्कर पैदा करेगी. डैम्पनेस के लक्षण है. इन सबका बहुत ही एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है कि क्यों चक्कर पैदा करती है, ये सब चीजें क्यों पैदा करती है. तो कुल मिला के अगर डैम्पनेस शरीर में बढ़ गई तो ऊर्जाएं जा ही नहीं पाएंगी. जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? तारों से आती है. अब तार के रास्ते में कचरा जम जाए, यानी तार का रास्ता अगर रुक जाए, अटक जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, कट जाए, तो घर में ऊर्जा नहीं आ पाएगी. उसी तरह से जब हमारे शरीर में डैम्पनेस बढ़ जाती है तो ऊर्जाएं सिर तक नहीं पहुंच पाती, और जब सिर तक नहीं पहुंचती तो सिर चकराता है, सिर घूमता है. So when the person is having more dampness in the body, the dampness is obstructing the path and the energy will not able to flow to the head region, and head will be empty and the person will feel dizzy, mudgy, giddy, right? So if the dampness is in the chest region, it will create fullness and stuffiness in the chest region. अगर ये हमारी छाती में आती है तो छाती में भारीपन पैदा करती है. कुल मिलाकर कचरा ही तो है.
जहां जाएगा वहां गड़बड़ पैदा करेगा, वहां भारीपन पैदा करेगा। डैम्पनेस का एक ही लक्षण है, भारीपन भारीपन भारीपन। So wherever dampness is there, there will be heaviness. Okay. So the person who is having more dampness will be more tired, feeling too much heavy, mudgy, and fullness and stuffiness in the chest. अगर शरीर में dampness बढ़ जाती है तो व्यक्ति को थकान लगती है, अंगों में भारीपन लगता है, ऐसा लगेगा कि कितने किलो का वजन लटका दिया है, सिर में चक्कर आएंगे और सीने में भारीपन लगेगा। So the meaning of dampness is dirtiness. So the meaning of dampness like the dirtiness, right? तो जब हमारे शरीर में डैम्पनेस बढ़ती है तो आप समझ जाइए कि डर्टीनेस बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति जो पहले 50 किलो का था, अब आजकल खूब खा पी के वो अगर मान लो 80 किलो का हो गया, तो समझो कि उसने 10-20 किलो तो कचरा जमा करके रखा है बॉडी में। वही वो डैम्पनेस है जो बीमारियों को बुलावा देगा। So when the person was having only 50 kg body weight, now has become 75, 80, 85 or more than that. So he has collected lots of unwanted dampness, and now this dampness will invite all other diseases. Okay, because dampness is responsible for the disease, because dampness is nothing but dirtiness, right? So now, if the person is getting more dampness, the urine will be cloudy. जब वो पेशाब करेगा तो पेशाब में से झाग झाग जैसा क्लाउडी यूरिन निकलेगा। फीमेल को वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, और कभी घाव हो जाएगा जिससे पस निकलेगा। अगर पस वाला घाव होता है वो भी एक तरह की डैम्पनेस है। द पर्सन इज सफरिंग विद द क्लाउडी यूरिन, लाइक द यूरिन विल बी हैविंग looking like cloudy, and the female might suffer with the vaginal discharge, and the person might get the injury on the skin, the wound in the skin, and which is oozing out. There is a pus is coming out from the wound. So the pus also is the dampness. Pus also nothing but dampness. Pus भी एक तरह की dampness होता है। So when we want to see the dampness through the tongue, जब आप जीभ को देखते हैं तो जीभ के ऊपर आपको एक चिपचिपी कोटिंग मिलती है, चिपचिपे रंग की कोटिंग मिलती है जीभ पर। So when the person is having dampness, कैसे पहचानोगे? पहचानना बड़ा आसान है। आप उस व्यक्ति से पूछोगे कि भाई बताओ कि जब आप सुबह टॉयलेट, जब आप स्टूल करने जाते हो तो पानी डालते हो तो पानी स्टूल बह जाता है कि नहीं बहता? बोलेगा नहीं नहीं चिपक जाता है। यानी आपने स्टूल के बाद पानी डाला, फ्लश किया। आजकल तो खैर आजकल तो वेस्टर्न स्टाइल के ज्यादा हो गए, लेकिन पहले इंडियन स्टाइल में था ना कि पहले आप स्टूल के बाद आप पानी डालते हो। अब स्टूल नहीं बह रहा, चिपक गया, यानी डैम्पनेस है। So this is a very good diagnosis. You can ask the person, okay, please we and tell us, because person nowadays many people are using the Western style toilet and they are not aware with that. Otherwise, this is a very good diagnosis. After passing the stool, if you are putting the water, if stool is stick with the pot, it is a sign of dampness. So kindly remove the dampness, expel the dampness. And in acupuncture we are having wonderful point to expel it. हमारे पास बहुत अच्छे पॉइंट है इसको बाहर फेंकने के। दूसरा साइन है कि आप उसकी जीभ देखोगे, जीभ के ऊपर चिपचिपी कोटिंग मिलेगी। You will find the sticky coating on the tongue. Sticky coating, sticky, too much sticky coating on the tongue. That is also the sign of dampness. ये भी हमारे dampness की निशानी है। So the meaning of dampness, chipchapa, sticky, chipchapa, sticky. Someone is feeling very sticky feeling on the skin. That is the dampness. So if you feel stickiness anywhere in the body, that is a sign of dampness. कहीं भी आपको चिपचिपापन महसूस हो तो वो dampness का साइन होता है, राइट? तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि बहुत ज्यादा हौच-पौच हो गया दिमाग में? Whether you are able to understand or not, all of you. Clear? Okay. Fine. Okay. See, the dampness is not connected with the sweaty palm.
Sweaty palm is a different thing, right? See, someone is having sweating from the palm, that's a different thing. But I am telling about stickiness. Stickiness is, that is true. Someone is having sweating from the axilla and feeling too much sticky here. Someone is feeling internal sweating and feeling too much sticky. But the person is having only sweaty palm. That might be some other thing. We will discuss shortly. तो कभी किसी को यहाँ बगल से पसीना निकलता है या जेनेटल पार्ट से पसीना निकलता है, उसके कपड़े गीले हो जाते हैं और वो स्टिकीनेस में काफी समय तक रहता है, फिर उसे स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है. कई लोगों को ऐसा होता है, वो सब डैम्पनेस के कारण होता है. ध्यान रखिएगा. Whenever we are looking many diseases, now see, dampness has appeared. Now, as soon as dampness is in your body, now your body is ready for the diseases. Ready for the disease, because any disease first create dirtiness in the body. Without the dirtiness, disease cannot be appear. तो जब चाइना में कोविड का प्रिवेंशन प्रोटोकॉल दिया था, उन्होंने कहा था कि वो सारे लोग कोविड के शिकार नहीं होंगे जिनके अंदर डैम्पनेस नहीं है. So the people not having dampness, even the COVID virus cannot do anything. But unluckily nowadays, most of the person are having dampness because 95% people are not following the right diet schedule. Who is following? Only 5% people, or more, maybe 10%, but not more than 10%. हम सबके शरीर में dampness है. क्यों? क्योंकि अगर हम डॉक्टर हैं तो भी हम अपने काम पढ़ते रहते हैं, अपने काम के पीछे लगे रहते हैं, खाने पीने का इतना ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज का इतना ध्यान नहीं रखते, है ना. और रखते भी हैं तो पहले नहीं रखा, वो तो है अभी. So all of us are having the collection of dampness. That's why people are suffering from the COVID-19. So as per the Wuhan hospital of China, the prevention protocol of the COVID is just to remove the dampness from the body. If you remove the dampness from the body, then you will not suffer from the COVID-19 or even any other problem. आजकल मुंबई में dampness बहुत ज्यादा है, इसलिए आप देखिए मुंबई में हमारे वो कौन है, आदिब जी ने बताया हमको, आदिब रहमान जी ने, कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति को अर्टिकेरिया है. In the Mumbai, urticaria, the people are suffering with the urticaria too much. This is also because of the dampness or because of the dirtiness in the body. Because the Mumbai weather supports dampness. Mumbai weather is damp. Even the Kolkata is damp. Even many other parts are very damp. ये दो जगह तो ऐसी है जिनको मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है कि यहाँ पर बहुत डैम्पनेस है, लेकिन और भी जगह हो सकती है. Yeah, urticaria when you are suffering with the itching on the skin. So these all things because of the dirtiness in the body. You have collected lots of dirtiness in the body. So when the person is suffering with any types of the acute infection, this is due to dampness. Suppose jaundice, urinary tract infections, leucorrhea, gallstone pain, suddenly kidney stone pain, any problem which need immediate hospitalization, that is because of dampness. जितनी भी प्रॉब्लम है जब उसमें डैम्प के साथ हीट मिल जाती है और वो डैम्प हीट बन जाती है. So as per the acupuncture, damp plus heat is equal to infection. So what is infection? Infection means infection is equal to dampness plus heat, right? So you are running to the hospital. Okay. So if you are not having dampness, then you will not get affected with the many diseases. हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम डैम्पनेस को खत्म कर दें. फिर ना तो गॉल स्टोन होगा, ना किडनी स्टोन होगा, ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, ना ल्यूकोरिया होगा, ना किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन बॉडी में होगा, ना डायरिया होगा. These all are due to the result of dampness in the body, because dampness want to create the dirtiness and want to go down, right? So now
just I am telling two type of the dampness and the remaining part we will discuss tomorrow. Dampness दो प्रकार की होती है, पहली होती है एक्सटर्नल, दूसरी होती है इंटरनल। और ध्यान रखिएगा, डैम्पनेस और फ्लैम अलग अलग होते हैं, दोनों एंटायरली अलग हैं। कभी भी आप डैम्पनेस को फ्लैम मत समझिएगा। डैम्पनेस इज नॉट द फ्लैम। गॉट इट? I will give you one example. Like, if you see, water is the, आपने वो देखा होगा कि water is the dampness. Suppose water is the dampness and the steam came out from the water, steam, that is phlegm. So phlegm is very light in the nature. Phlegm की बात हम कल करेंगे अगली क्लास में. So the phlegm and dampness are entirely different. There is a very big difference I will tell you today. Dampness is very heavy, okay, and want to go down, and having too much weight. Dampness का वजन बहुत होता है, जैसे हाथी को आपने ले लिया, dampness का वजन होता है हाथी की तरह। और फ्लेम भी हैवी होता है, लेकिन वजन नहीं होता, जैसे भूत को देखा है? अगर भूत आपने देखा होगा, कौन सी मूवी आई थी? अगर आपके शरीर में भूत आ जाए, जैसे हमने मूवी में देखा है, रियलिटी का तो पता नहीं, कि अगर किसी के शरीर में भूत आ जाए तो वो कोई भी हैवी से हैवी चीज उठा लेता है। वो कौन सी मूवी आई थी? साउथ इंडियन मूवी, उसमें वो उसके अंदर भूत आता है तो वो कुछ भी उठा लेती है। कौन सी थी? पता होगा, जरूर आपको पता होगा। आपने देखा होगा किसी के अंदर भूत आता है ना, तो उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाती है। वो कहां से आती है? वो कुछ भी उठा लेता है। हाँ, चंद्रमुखी के अंदर जैसे वो भूत आता है ना, तो वो ऐसे करती है, बाल पीछे जाते हैं उसके, हू करके पूरा पलंग उठा लेती है एक हाथ से, है ना। और वैसे लेडीज को पलंग उठाना तो बुलाएगी, प्लीज आओ उठाओ, इसको हेल्प करवाओ, है ना। लेडीज कभी पलंग नहीं उठाएगी, वो हैवी होता है। और चंद्रमुखी एक हाथ से हू उठा लेती है। वो पावर कहां से आती है? वो पावर आती है फ्लेम से। So flame is very powerful. When flame is attacking on your heart, and you take the X-ray. अब आप चंद्रमुखी का एक्सरे निकालो, MRI निकालो, दिखेगा क्या अंदर कौन बैठा है? दिखेगा? नहीं दिखेगा। So flame cannot be seen by the X-ray, by the MRI, by anything. But dampness can be seen. आप dampness को देख सकते हैं। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि dampness is visible. dampness को देखा जा सकता है। dampness बहुत भारी होती है, उसको देखा जा सकता है। फ्लेम भी बहुत भारी होता है, लेकिन वो अदृश्य होता है, अदृश्य, राइट, इनविजिबल। और जितने भी किसी के दिमाग में फ्लेम घुस जाए, रिपोर्ट में आता नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। ओके, सो फ्लेम इज वेरी डेंजरस। वेयर एवर इट गो, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। तो हम फ्लेम और डैम्पनेस की डिफरेंशिएशन की कल हम बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम क्लास कल करेंगे। Flame and dampness both come in the earth element. Both are heavy, but flame is very subtle. Flame is very subtle. Okay. Flame is highly subtle. It is invisible, like the ghost. Ghosts are invisible. Person will come to you, doctor, I'm feeling too much heaviness in my chest, but you are not getting anything in the X-ray, MRI. This is the flame. Doctor, I'm feeling too much heaviness in my head. Nothing coming in the report. That is the flame. Doctor, this patient, some family member telling you this patient is having some mania, sometime becoming very excited, sometime becoming depressed. So the many mental disorder you can't trace in any report. कई सारे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते। वो सब क्या है?
वो फ्लैम है। और सबसे बड़ी बात, एक व्यक्ति अपनी बीवी पर डाउट करता है, डाउट, द वन पर्सन इज डाउटिंग द वाइफ एंड इवन द वाइफ इज डाउटिंग द हस्बैंड। तो डाउट इज, व्हाट इज डाउट? कौन सी रिपोर्ट में डाउट आएगा बताइए शिव शंकर गुप्ता जी? डाउट को चेक करने के लिए कौन सी रिपोर्ट कराएंगे? कि संदेह, उसके दिमाग में संदेह रहता है ना? कोई रिपोर्ट है? नो, नो एनी रिपोर्ट. You cannot check the doubt, but doubt is creating true happiness. Even the person is not able to perform anything if the person is having doubt in the mind. So what is doubt? Doubt is flame. So flame are invisible. They are very powerful. They will destroy the life. Maybe the person who belongs to you, but they are invisible. वो दिखते नहीं हैं. Flame is not visible. Okay. इसकी बात हम कल करेंगे, right? Lipoma is also कमिंग इन द सेम कैटेगरी. हम लाइपोमा की बात भी कल करेंगे. तो चलिए आज के क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं. अब हम कल मिलेंगे. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. गुड नाइट. स्वीट ड्रीम.